Hello, good evening, everyone. Hi, this is Tanu Vermani from babycode IELTS. So today's session is about linking words, connectors for the IELTS speaking. We will look at what are linking words and some of the tips how you can use these linking words in your speaking test. We will look at some of the signposting language as well for the speaking module. Okay, so let's get started. Linking words क्या होते हैं? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हमें यूज करने हैं स्पीकिंग में? सो लिंकिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए टू फ्रेजेस को, टू सेंटेंसेस को या आइडियाज को, जिन्हें भी हम स्पीक करते हैं या राइट करते हैं जब हम इंग्लिश में, राइट, उन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। अगर हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ड्स का तो हमारा ट्रांजिशन जो होता है दैट मीन्स हम वन सेंटेंस से नेक्स्ट सेंटेंस में या वन पार्ट ऑफ अपनी स्पीकिंग से सेकेंड पार्ट में स्मूथली ट्रांजिट हो जाते हैं। दैट मीन्स हमारे कन्वर्सेशन का जो वो फ्लो है वो बहुत नेचुरल दिखता है, इजी फ्लो ऑफ मैनर दिखता है हमारी स्पीकिंग का। लिंकिंग वर्ड्स जो आपके स्पीकिंग सेक्शन में है वो एग्जामिनर को ये बताते हैं कि आप कितने अच्छे से टॉपिक को जानते हो और कितने अच्छे से आप अपनी फ्लुएंसी को शो कर पा रहे हो। और एग्जामिनर इस चीज को इवैल्यूएट भी करता है अगर आपके पास नॉलेज है लिंकिंग वर्ड्स की, अगर आप यूज कर रहे हो तो उनके लिए इजी हो जाता है आपकी फ्लुएंसी को चेक करना, राइट। सो फॉर दोज जो स्पीक करते हैं इंग्लिश ऑफन, वो क्या यूज करते हैं? लिंकर्स यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ड्स यूज करते हैं विदाउट एनी एफर्ट, राइट। सो लिंकिंग वर्ड्स डिफरेंट होते हैं स्पीकिंग के लिए और डिफरेंट होते हैं राइटिंग के लिए। वी विल लुक एट लिंकिंग वर्ड्स फॉर स्पीकिंग। हम स्पीकिंग के लिए देखेंगे कि कौन कौन से लिंकिंग वर्ड्स हमें यूज करने हैं। सो द वेरी फर्स्ट कि लिंकिंग वर्ड्स हमारे स्कोर को कैसे इंप्रूव करते हैं। लिंकिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आइल्स स्कोर के लिए, क्योंकि जब आप चेक करोगे अपना बैंड डिस्क्रिप्टर्स तो वहां पे आपको ये मेंशन होता है कि आपको कनेक्ट करना है अपने आइडियाज को फ्लुएंट एंड कोहेरेंट वे में। सो बेसिकली अगर आपको क्लियरली अंडरस्टूड करना है और इम्प्रूव करना है अपने आइल्स स्कोर को तो आपको एक गुड लिंकिंग वर्ड स्किल्स आनी चाहिए। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैज डाउनलोडेड दैट बैंड डिस्क्रिप्टर्स? Anyone who has downloaded? No? So please download that band descriptors वाला PDF so that आपके लिए easy हो जाए उसको रीड करना एंड उसको समझना कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, अब आप यूज कैसे करते हो लिंकिंग वर्ड्स को? जब भी आप स्टार्ट करते हो स्पीकिंग, लिंकिंग वर्ड्स के टू फंक्शंस होते हैं स्पीकिंग में कि वो आपको गाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ योर आइडियाज के साथ एंड दे गिव यू सम टाइम टू थिंक ऑल्सो। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द IDP वेबसाइट या फिर आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो स्पीकिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स, तो आपको PDF मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड। नाउ एज आई सेड कि लिंकिंग वर्ड्स के टू फंक्शंस है। फर्स्ट इज कि वो आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं आपको फॉर द डायरेक्शन ऑफ योर आइडियाज, एंड सेकेंड इज दे गिव यू टाइम टू थिंक, और आपको सोचने के लिए टाइम भी देते हैं लिंकिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यूज करना है ट्रांजिशन वर्ड ऑन द वन हैंड एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड, you signal to the listener that you are discussing two sides, है ना। जब आप बोलते हो on the one hand, on the other hand, तो इसका मतलब आप लिसनर को, एग्जामिनर को, if you are looking for tips, a person with the name of A, if you are looking for tips because tomorrow you have exam, तो आप IELTS के टिप सेशंस देख सकते हो, ऑलरेडी देयर आर रिकॉर्डेड क्लासेस देयर, सो आप ऐप में टिप्स की क्लासेस चेक कर सकते हो, ओके। Or in the end of the session I can help you with. So transition words on the one hand, on the other hand, जब हम ये बात बोलते हैं that means आप क्या बता रहे हो लिसनर को कि आप टू साइड्स डिस्कस कर रहे हो, कि फर्स्ट हैंड में आपने ये बताया एंड ऑन द अदर साइड आपने सेकंड थिंग डिस्कस कर। सो ट्रांजिशन वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, आपकी डायरेक्शन बताते हैं आइडियाज की, राइट। These transition words, they tell the listener to be alert for two opposite sides, right?
कि दोनों साइड्स अब डिस्कस होंगी, तो यू शुड लुक, अलर्ट कर दिया, राइट। अदर फंक्शन इज दे गिव यू टाइम टू थिंक, आपको सोचने का भी टाइम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से इफ आई वर टू गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस, इट गिव्स यू टाइम टू स्पीक। सो आप कुछ फ्रेजेस का ऐसा यूज करते हो जो आपको क्या टाइम देता है सोचने के लिए, लिंकिंग वर्ड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस, अगर आपने इतना ही बोल दिया, देन आप सोच सकते हो कि आपका ओपिनियन क्या है, एंड देन यू कैन ब्रिज द आइडियाज। आपने एक फ्रेज लर्न करा, एक फ्रेज बोला, आपने एक टाइम लिया, देन आपने अपने स्टेटमेंट को क्या करा, कंप्लीट करा, राइट। तो while you're bridging the ideas, while the linker phrase, it gives you think of what to say. So आप linker का क्या कर रहे हो यहाँ पे, यूज कर रहे हो, right? So let's look at some of the tips जो आपको फोकस करती हैं इन स्किल्स को एनहांस करने के लिए। टिप नंबर 1 इज डोंट ओवर यूज ट्रांजिशंस, कभी भी आपको ओवर यूज नहीं करना, राइट। आई टॉक टू अ लॉट ऑफ टीचर्स दैट ऑलवेज कंप्लेन, वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि देयर इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स, दे लर्न फ्यू ट्रांजिशन वर्ड्स एंड देन यूज देम इन एवरी सेंटेंस। ऐसा आपको नहीं करना कि आप फ्यू ट्रांजिशन वर्ड्स को लर्न करो और उनको हर जगह यूज करते रहो। नो, नॉट इन एवरी सेंटेंस। ग्रामर इज करेक्ट, बट राइटिंग क्या हो जाती है, रोबोटिक लगती है। सो मेक श्योर कि आप राइटिंग में भी उसे चेक करो, राइट। एवरी पैराग्राफ और एवरी लाइक क्यू कार्ड में आप 2 मिनट्स के लिए कॉन्टिन्यूस बोलते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हो फर्स्ट पैरा में, सेकंड स्टेटमेंट अ काइंड ऑफ अ पैराग्राफ आप बोलते हो। सो यू शुड थिंक अबाउट फर्स्टली, सेकेंडली, ट्राई एंड रीड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल कि आपको कहाँ पे यूज करना है, कहाँ नहीं करना, राइट। बी एक्यूरेट, एज मेंशन कि देयर आर थाउजेंड ऑफ वेज टू कनेक्ट योर आइडियाज, आप अपने आइडियाज को बहुत सारे तरीकों से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। सो आपको क्या करना है, जब आप आइडियाज को बहुत सारे तरीकों से कनेक्ट कर सकते हो, मेक श्योर कि आप उसे कैसे करो, करेक्टली करो, राइट। डू योर होमवर्क, दैट मीन्स आप चेक करो, डिफरेंस देखो कि ये जो आपने कनेक्ट करा है आइडिया, ये करेक्ट है कि नहीं है करेक्ट, राइट। रिजल्ट्स ऑफ, रिजल्ट्स इन, कहाँ पर क्या यूज होना है ये आपको चेक करना है कि रिजल्ट्स ऑफ करेक्ट है या रिजल्ट्स इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज मिक्स इट अप। नाउ हाउ इट इज, आई वंस हैड अ फ्रेंड जो क्या बोलता था, एक्चुअली बोलता था अबाउट 100 टाइम्स इन एन आवर। सो इट वॉज रियली अनोइंग, क्योंकि अगर आप एक ही वर्ड को इतना बार यूज कर रहे हो, सो दैट मीन्स देयर इज लॉट्स ऑफ रेपिटेशन। तो रिमेंबर कि वेराइटी ऑफ फ्रेजेस होते हैं जो आपको हाईएस्ट पॉइंट्स देते हैं, तो यू शुड यूज दोज, है ना। आप बार बार एक ही चीज, एक्चुअली, लाइक, ऑल्सो, बिकॉज, दीज आर वेरी कॉमन जिनको बार बार यूज करते हैं, आप 100 टाइम्स यूज करते हो, उनको आपको यूज नहीं करना, राइट। टिप नंबर 4, स्टॉप द स्टॉप द राइट, बिकॉज आपको इससे क्या मिलने वाला है, लो स्कोर मिलने वाला है। सो अगर आपको लो स्कोर चाहिए, देन यू कैन टॉक अबाउट इट, राइट। बट इससे ये पता चलता है कि आपकी जो फ्लुएंसी है ना, वो उतनी फ्लुएंट नहीं है। दैट मीन्स आप एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं हो। सो ट्राई करो कि आप रिप्लेस करो इन वर्ड्स को विद लिंकर्स के थ्रू, कनेक्टर्स के थ्रू, राइट। ऑल्दो ट्रांजिशंस का कोई मीनिंग नहीं होता अगर आप अलोन उन्हें यूज करो, वो इम्पोर्टेंट तब है जब आप कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हो, जब आप स्पीकिंग कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप डिस्कोर्स मार्कर्स और लिंकर्स का यूज करो टू बिकम अ बेटर स्पीकर, राइट, so that you can have a better score. Now, what are the tips for using the linking device? कैसे आपको यूज करना है? There are few more tips जो आपको keep in mind रखनी है जब आप linking words को यूज करते हो, right? Linking words cannot be used everywhere. आप हर जगह उनका यूज नहीं कर सकते. When examiner asks you to talk about yourself,
it is advisable not to use linking words. तो जब भी एग्जामिनर आपको ये बोलते हैं आपके बारे में बात करने के लिए, राइट, यू हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, जब आपको आपसे रिलेटेड बात करनी है तब आपको लिंकिंग वर्ड्स का यूज नहीं करना. सो मेक श्योर जब आप पार्ट 1 कर रहे हो, पार्ट 1 इज जनरली अबाउट यू, राइट, और अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, देन यू कांट से कि लेट मी थिंक अबाउट इट, राइट. Usage of linking words in the speaking test is completely different from the usage of linking words in the writing test. Speaking के linking words and writing के linking words, they are completely different. So make sure कि you have to keep in mind कि same आपको use नहीं करने. Some are different. Writing में जब आप करते हो, they are different. Speaking में they are different. Linking word like can be used only during speaking. While giving example, it is not advisable to use linking word like while writing. अब like का यूज आप स्पीकिंग में कर सकते हो जब आप एग्जाम्पल्स देते हो, बट राइटिंग में अगर आप एग्जाम्पल्स के साथ like लिख रहे हो, देन इट इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप वहां पे like का यूज करो. वी ऑलवेज से फॉर इंस्टेंस, टू इलिस्ट्रेट, राइट. कभी भी आपको like नहीं बोला जाता कि आप like लिखो, राइट. You will not get a high score only based on how many times you have used the linking words. There should be some content which impress the examiner to give a higher score. As I told you, कि सिर्फ लिंकिंग वर्ड्स आपको ओवर नहीं करने कि कितनी बार आपने लिंकिंग वर्ड्स का यूज करा है, सिर्फ इससे आपको हाई स्कोर नहीं मिलने वाला. आपका कंटेंट जो आप स्पीक कर रहे हो उसमें कितना रिक्वायरमेंट है लिंकिंग वर्ड्स का, वो चीज एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है. तो लिंकिंग वर्ड्स जो आते हैं वो नेचुरली, राइट, दे कम नेचुरली जब आप स्पीक करते हो. ओके, सो डू नॉट ओवर यूज एनीथिंग. Now let's look at some of the linking words. First is conjunctions. अब कौन कौन से linking words होते हैं? Simple connectors जो होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं conjunctions. And, but, or. How many of you are aware of conjunctions? Yes, please. Okay. Sunanda, yes. Let's look at complex connectors also. When you have to add more information to the sentence, जब आपको more information अपने sentence में डालनी है, तब आप क्या करोगे? Linkers का use करोगे. For example, अगर आपका first connector, first linker है another reason is, तो आप example देखो. Another reason for placing the pot outside is to get sunlight. Can anybody make any sentence with another reason? Yes, please. Another Ma'am, yes. another reason is going to there to meet my friend. Another reason, sorry, come again. Another reason for going there to meet my friend. Another reason for going there or for visiting the place is to meet my friend. Friend. Yes. Also he was interested in playing the piano. And the plants need water and sunlight. As well as he was a writer as well as a soldier. Make any sentence with as well as. You are my mentor as well as my teacher. Yes, correct. Okay, let's look at some more connectors.
Time phrases. Can anybody at the moment make a sentence with at the moment? At the moment describes the time in the sentence. At the moment. Please make a phrase, a sentence with at the moment. At the moment, I'm having difficulty in catching up. Why to pause? Why to pause while speaking a single sentence, David? Nanai? I forgot what I want to say. I want to start. Do not take a pause when you're speaking a single sentence, right? Okay. Okay, anyone else? Ma'am, at the moment I reached the market. I reached there and the market will close. Market was closed. Okay. Diabetics Anybody else? pills. Yes, at the moment, I forgot my diabetics pill. Yes, correct. Not as the moment, at the moment. At the moment, okay, sorry. Yes, at the moment. Right now. At the moment. Make a sentence with right now. Right now. Right now, there are many opportunities. What are you doing right now? Right. But वो question हो गया है. I'm in a, it's No, there are okay. many I'm in a opportunities. meeting right now. Right? At present. My entry. At present. Right now, Yes. there are many opportunity. There are many opportunities. There are many opportunities in my country. At Okay. present, I'm in the class. At present, I want to go out. Okay, these days. These days. Try to make a sentence with these days. I am preparing IELTS these days. Yes. What about others these days? Yes, correct. Nowadays. Nowadays. Nowadays, technology play important role in our life. Any another? Nowadays, it's quite common to be late at home. Nowadays, people say Nowadays, everyone works very hard to achieve their goal. Yes. In the past. Now make a sentence with in the past. In the past. Yes. I'm playing with my child in the park. In the past. We are talking about time phrases. In the past. In the past. Okay, sorry. Life was easy in the past. In the past, life was easy. Yes. Years ago. Or at that time. Try to make with these two. A year ago, I met my best friend. Yes. Correct. Okay. Now let's look at causes and solution. Try to make a sentence with a word because. Now, because
See, when you have to describe the cause and solution of any topic, जब आपको cause पे describe करना है, solution पे describe करना है, how will you use because? Okay, let me give you one example. Because I met with an accident, I'm unable to go to the office. Now try to make a sentence with because. Anyone, please make a sentence with because. Yes, please. I am unable to go there because my sister needs me a lot. I'm unable to go there. I am unable to go to my office because my sister needs me a lot. Yes. Okay, anyone else? Because I'm ill today, I did not hear the class properly. I'm unable to attend the class, right? Okay, I guess it is because of. Make a sentence. I guess it is because of the weather. I suppose the best way to deal with the problem is to leave home. The main reason is for painting the windows is to prevent it from rusting. So we have a cause and we have a solution too, right? यहाँ पे cause भी है and then solution भी है. Cause, solution. So reason, solution. It was caused by the waves. It. The best way to solve this is to put in water. So you are using linking words for cause and solution. Okay? Yes, sir. Yes, ma'am. Let's look at expressing ideas. How to express ideas. I think one important thing is, this is the connector. I think one important thing is missing here. I think the main differences between a hen and a sparrow is that the later can fly high. So this is a linker to express the idea. I guess one difference is this is a linker to express ideas. Focus on the linker as well as the example also. Three linkers to express ideas. Some more linkers जिससे आप examples दे सकते हो. जब भी आपको examples देने हैं, you can use these linkers. For instance, like, for example, such as. So these are the linkers for. Instead of using like all the time, जब आप बहुत ज़्यादा repeat करते हो like को, you can use these to give example. So whenever you're talking in the cue card या आप part 3 में answers दे रहे हो, make sure कि आप जब भी examples दो, किसका use करो? इन linkers का use करो. Okay? Now some linkers for being clear. जब आपको clearly अपने statement को एक sentence को state करना है, तब आप कौन से linkers का use करोगे? What I want to say is, as I was saying, what I mean is, right? So आप clearly क्या कर रहे हो? अपने sentence को state कर रहे हो, right? So जब भी आपको अपने sentence को state करना है, you will use these linking words.
क्लियरली स्टेट करना है अपने सेंटेंस को, कॉन्ट्रास्ट करना है, जब भी आपको एक्सप्लेन करना है अदर साइड ऑफ द टॉपिक को, you will use these linkers. But while on the other hand, although, or. So these are the linkers for contrasting. You can see the example also. While you were in London, your sister moved to a new house. On the other hand, it could have been better if it was handcrafted. Although you know it well, you need to practice. So these are the connectors for being clear and for contrasting. For stating an opinion, जब आपको अपना opinion state करना है. We also talk about opinion in writing also, right? हम writing में भी use करते हैं. But how to use in speaking? Because speaking में भी आपको अपना opinion देना होता है part 3 के questions में, right? Part 3 में जब आपके पास कोई ऐसा question आता है जिसमें आपको describe करना है, so how will you state your opinion? As far as I am concerned, in my opinion, right? I believe that from my point of view. So as far as I'm concerned, it is all well. In my opinion, the couple should discuss their problems with the lawyer. I believe that it is not good to invest in gold. From my point of view, both are equal, right? To express an agreement, अगर आपको express करना है that you agree with the topic, ठीक है, जब आप अपना agreement express करते हो कि आप agree कर रहे हो given topic पे, तो आप क्या use करोगे? Following linking words. I am in an agreement. I quite agree that. I accept that. Exactly. So you will use these linking words एग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए कि यस यू आर एग्रीइंग, और अपना ओपिनियन स्टेट करने के लिए यू विल यूज दीज लिंकिंग वर्ड्स, स्पेशली इन द पार्ट 3. ये आपके पार्ट 3 ऑफ स्पीकिंग टेस्ट में यूज हो. David, please mute yourself. Now let's talk about signposting language. I hope linkers are clear now. Yes, everyone, any doubts in linkers part? What are signposting language? Signposting language क्या होती है? हमने listening में भी ये पढ़ी है. Signposting language वो manner है जिसमें speaker guide करता है अपनी audience को through information. कुछ words ऐसे use करके guide करना listener को कि आप क्या बताने वाले हो. So कुछ signposting words होते हैं to begin with, however, in the same way, unfortunately, likewise, similarly, nonetheless, fundamentally, incidentally, furthermore. So ये क्या है? Examples हैं. Now see the examples here. To begin with. To begin with, let's take a look at the eyes of the painting. So to begin with मतलब कि वो start कर रहे हैं, right? क्या बताने वाले हैं? They will discuss about eyes of the painting. Ram had served in visions on driving at the top of hill. However, अब however यहाँ पे contrast के लिए. So that means वो क्या करने वाले हैं? Contrast. That you should make a decoction of the coffee, but not in the same way. Unfortunately, his illness did not get better. So signposting language guide करती है अपनी audience को कि आप कुछ information उन्हें देने वाले हो, और कैसे देने वाले हो. जैसे listening में भी हमने करा था, signposting language guide करती है कि अब कौन सा topic discuss होने वाला है, क्या वो बताने वाले हैं. Likewise, गैप फिलर्स होते हैं जिन्हें हम डिस्कोर्स मार्कर्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है? रिप्लेस करने का फिलर्स को. राइट. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज
to indicate emotions के लिए भी. Well, John has breathed his last after much suffering. Indicates emotion, है ना? Has breathed his last after much suffering. I kind of like it. So not sure, but yes, kind of like it. So linking words क्यों important है? Linking words इसलिए important है because वो आपको क्या हेल्प करते हैं कि आप स्ट्रक्चर कर पाओ अपने सेंटेंसेस को जो आप यूज करने वाले हो स्पीकिंग में ऑन द गिवन टॉपिक. आप अपने फिलर्स को अवॉइड करो. राइट, क्योंकि अगर आप इनका रिपीटेशन बार बार करते हो यू विल नेवर गेट योर स्कोर. एक हेजिटेशन आ जाती है, सेल्फ करेक्शन भी आ जाता है, तो आपको उनको अवॉइड करके लिंकिंग वर्ड्स का यूज करना है स्पीकिंग में. राइट, और लिंकिंग वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं टू गो ऑन स्पीकिंग, कि आप बोलते रहो अंटिल एग्जामिनर आपको स्टॉप करे. वो आपको आइडियाज देने में हेल्प करते हैं कि आप अपने आइडियाज को ऐड कर सकते हो. जब तक आप अपने सेंटेंस को फ्रेम करोगे आप एक लिंकर का यूज कर सकते हो. राइट, लिंकिंग वर्ड्स कैन बी यूज व्हेन यू हैव टू हाईलाइट. जब आपको अपनी स्पीकिंग को हाईलाइट करना है, अपने इंट्रोडक्शन को बताना है, अपनी कंक्लूजन, जो भी आपका क्यू कार्ड का टॉपिक है, जो भी आप डिस्कस कर रहे हो पार्ट 3 में, आप लिंकिंग वर्ड्स के थ्रू कर सकते हो. राइट, और यूज करने से लिंकिंग वर्ड एक एग्जाम्पल, ठीक है, सेंटेंस जो भी आप बोल रहे हो वो एग्जामिनर को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है. सो पर्पस एज वेल एज ओपिनियन जो होता है आपके सेंटेंस का, जो भी आपने स्पोक करा, वो एक्सप्लेन हो जाता है यूजिंग द लिंकिंग वर्ड्स. सो इफ यू कैन यूज लिंकिंग वर्ड्स, अगर आप यूज करते हो लिंकिंग वर्ड्स करेक्टली अपने सेंटेंसेस में, तो 25% ऑफ मार्क्स मिलते हैं. दैट मीन्स आपकी जो ग्रामर है उसका 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. राइट, आपको जो भी 4 पैरामीटर्स है उन सबका 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो मेक श्योर कि आप लिंकर्स को क्या करो, अच्छे से यूज करो. लेट्स सी अ क्यू कार्ड टॉपिक. Okay, I'm giving you 1 minute to prepare for this, and then next 2 minutes you have to speak about it. Your cue card topic is describe your favorite movie. You should say when and where you saw it, what type of film it was, what the film was about, and explain why it is your favorite film. So 1 minute, and then after 1 minute you have to speak with the usage of linkers. Yes, anyone who would like to start and speak about it? Can I try? Yes, Kashyap, please. Or Just give me a second. Let me start with the timer. You have to use some linkers also. Okay? okay, ma'am. Okay. Yes, please start. I watched so many movies in my life, but here I would like to speak about my favorite movie, that is Mastane. I watched this movie last month with my friend in Sarab complex. So this is movie about our culture, like it's on Sikhism, history of Sikhism. I like this movie because
I like this movie because it show our culture and about time of Maharaja Ranjit Singh. In this movie, the main hero is Tarsem Jassar, which played very precious role. So that is the all reason I like that movie. That become my favorite movie. You're still left with 55 seconds. That means you spoke for only 1 minute. Yeah. Actually, I am driving, so I have no. I can understand. I can understand. Yeah. No problem. Okay. So let me show you the sample answer for this. And the very first thing is you can start with to begin with. है ना? You're about to start your क्यू का topic. तो आप क्या बोल सकते हो? To begin with. है ना? My favorite movie is this. Okay. See this. Now see how many connectors, how many time phrases, how the linking words, and what is the sign language used here. See, first is to begin with. The very question of what is your favorite movie to a cinephile. Cinephile means a person who watch movie. बहुत ज़्यादा cinema enthusiast person जिसको movie देखना बहुत पसंद है. Like me is a tough query. What I mean is there are countless parameters and factors. Look at the vocabulary also. है ना? अगर हम बिल्कुल basic use करते हैं तो why we will be provided with a very high band score? And factors that determine a particular individual's preferred movie or film. As far as I'm concerned. So ये linker किस चीज के लिए use होता है? अभी हमने discuss भी करा था. Anyone who knows? As far as I'm concerned. Yes, please. For stating opinion or to express agreement. किसके लिए use होता है? Yes. You all were there in the class. See this? For opinion. Yes, for stating an opinion. Opinion state करने के लिए हम क्या बोलते हैं? As far as I am concerned. Okay? The best piece of cinematic work. The best piece of cinematic work created and my personal favorite is Pulp Fiction. तो आप कोई भी अपनी favorite movie बता सकते हो. Written and directed by Quentin Tarantino, one of my favorite filmmakers. There are other makers, बहुत सारे other makers भी हैं filmmakers. आप भी उन सबके name बता सकते हो. The Safdie brothers and many more whose work जिनको आप admire करते हो and would like to pick as my favorite film. I think Pulp Fiction was one of my first film. Was one of the first film that made me realize my passion for cinema. In the past, time phrase use हुआ. In the past, I never paid much attention to the genre or language of the watching movies and television series with greater enthusiasm. Vocabulary, another reason. एक और हमारा linker यहाँ पर use हुआ is that once I had my own personal computer, I could watch films in my spare time, which was not possible before I graduated from class 12. I came across Pulp Fiction as I was searching for films that had a high IMDb rating during this time and found Pulp in the top 10 of the list. I downloaded the film right away on the desktop and began watching. I remember being entranced by the immaculate cinematography and the unique style of narration used by Quentin Tarantino. It was a drama film that revolved around one day of life of a few characters. In my opinion, again, a connector. One of the most stunning shots in cinema and also some of the greatest soundtracks, which are also my favorite features of the film. I quite agree. So, expressing an agreement, it might not be the greatest film ever made or even the best work of Quentin himself,
Nonetheless, Pulp Fiction is my favorite film. So you can see that how well you can use, आप भी कितने अच्छे से यूज कर सकते हो लिंकर्स को. अगर आप लिंकर्स का यूज करते हो, you will get band 8+ in your speaking. अगर आप एक ऐसा well developed response क्यू कार्ड में एग्जामिनर के आगे प्रेजेंट करते हो तो. Now see, to begin with, it's a signposting words जो use हुआ था. What I mean is connector and conjunctions. Connector और का use हुआ है. As far as I am concerned, opinion. Although का use हुआ है. In the past time phrase, I believe that. Another reason is, in my opinion. I quite agree that. And nonetheless. All these are used in this response. I hope you're getting that how important is the connectors, how important is the linking words. बहुत important है आपका linking words का use करना to get your score better in IELTS speaking.